Hello students, we are going to start our lecture second of concrete technology. So shall start with our second lecture of concrete technology. So students, if you remember last class in first lecture we studied about cement, constituents of cement and reaction of cement with water, that was also called hydration. Now let us study about one of the most important topics of cement, that is Bogue's compound. So let us see what is Bogue's compound. The raw material, when subjected to high temperature, combine with each other to form complex compounds. So likewise, till now we have studied that the raw materials in cement, what are those? We have calcium oxide, we have ferrous oxide, we have silica. When these compounds, when these constituents, so right now we are please understand that we are talking about the manufacture of cement. When we make cement, okay, जब हम cement बनाते हैं तो we have constituents, the raw materials to make cement, और वो क्या क्या है? We have ferrous oxide, calcium oxide, then we have silica. Okay, now these constituents to form cement, they combine with each other, okay, at very high temperature. जब cement बनता है तो ये सब constituents, ये सब जो है अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, constituents जो भी है लाइम, सिलिका, फेरस ऑक्साइड, आयरन, ये सब जो है एल्यूमिना, ये सब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एंड इट फॉर्म्स अनदर कंपाउंड. जब ये सीमेंट रेडी होगा तो उसमें अब जैसे हमने पढ़ा था सिलिका या फिर लाइम या फिर एल्यूमिना, वैसे प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे. अब ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो अनदर दूसरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ है. दे हैव फॉर्म्ड इनटू अनदर complex compounds, and these compounds are known as Bogue's compound. So in order to understand what's Bogue's compound, we should know that when the raw materials of cement, okay, when they are subjected to very high temperature, they combine with each other, okay, they combine and they form another very complex compounds, and these compounds are called Bogue's compound. So we have four major Bogue's compound which is formed after the cement is ready, after the cement is manufactured, after the cement is made. Now there is no more alumina, no more silica. Now it has formed into new compounds. And let us see what are those Bogue's compounds. Mainly there are four compounds. Let us see the first compound, that is tricalcium silicate. Okay, we have a chemical formula also, 3CaO SiO2, or in short, please remember this, we call tricalcium silicate as C3S. We call it C3S. Then second, which usually and C3S, if we in the total percentage of cement, it occupies around 30 to 50%. That's like the highest amount in the cement. Then in the second compound, it is dicalcium silicate. Okay, the formula is, you can see, 2CaO SiO2, and its abbreviated formula which you need to remember is C2S. Okay, and percentage is around 20 to 45. Now let us see the third one, that is tricalcium aluminate. Formula is 3CaO Al2O3, and the abbreviated formula is C3A, which usually contains about 8 to 12% of the total constituents of cement. Now the last one is tetracalcium aluminoferrite. Okay,
You can see the chemical formula, and its abbreviated formula mainly is C4AF. Okay, and its percentage constituent is 6 to 10% of the total amount of in the cement. So these are the main four compounds in cement that we find, and these are known as Book's compound. Okay. Now let us move to the next slide. Let us see the properties of Book's compound. Now all these Book's compound, they somehow or other they contribute to the properties of cement. Okay, for example, in our body we have many parts, right? We have hands, uh, we have like brain, we have eyes, we have mouth, we have ears, and everybody has its own role. Okay, everybody has its own property in your body. So similarly, in Book's compound also, we have uh, these Book's compound, they have their own unique property. So let us see what are these properties. First one is C3S. The properties of Book's compound are under C3S. So C3S, what is its property? It is responsible for early strength. Okay, now let us consider when we start adding water to the cement. ठीक है, सीमेंट में हमने पानी ऐड किया है, तो अब क्या होने लगेंगे? Now the cement, now hydration reaction होने लगेंगे. First thing, so after hydration reaction, जो जब सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन करने लगेंगे, जब सीमेंट में स्ट्रेंथ आने लगेंगे, तो जो अर्ली स्ट्रेंथ, जो शुरू में जो स्ट्रेंथ देगा सीमेंट, वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? इट इज मेनली ड्यू टू द C3S, यानी कि tricalcium silicate. So tricalcium silicate contributes the early strength of the cement. Okay, now let us see the second point. The first 7 days strength is due to C3S. Okay, तो सीमेंट जो है when it gains strength, ठीक है, जब वो strength gain करते हैं तो एक ही बारे में gain नहीं होता है, वो टाइम के साथ, ठीक है, हफ्ते के साथ, हफ्ते, months, साल, इस up to maximum of 1 year तक सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होते रहता है. इट्स नॉट लाइक कि 2 दिन या 1 दिन में सीमेंट का स्ट्रेंथ पूरा गेन होता है. तो जो शुरुआत की, जैसे मानो हमने आज सीमेंट और वाटर को मिक्स कर दिया, ओके, उसका पेस्ट बना के हमने उसको सेट हार्ड होने के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद से जो फर्स्ट 7 डेज जो होगा, 7 डे का जो अर्ली स्ट्रेंथ होगा, वो कौन देते हैं? मेनली C3S देते हैं. So C3S is responsible for the first 7 days early strength. Now third part, it produces more heat of hydration. Now this is where there is a problem. C3S जो है, even though it gives early strength, लेकिन ये heat of hydration ज़्यादा देता है. And we know that if heat is more, if there is more heat during hydration, then it's main cause for cracks. ठीक है? So let's remember that. Now the last part is cement with more C3S content is better for cold weather concreting. Similarly, now let us see the second Book compound, and that is C2S, or we also call it dicalcium silicate. So let us see the first point. The hydration of C2 starts after 7 days. Hence, it gives the strength after 7 days. So till now, guys, we have studied that the first 7 days का strength जो है वो C3S देते हैं. So C2S क्या करेंगे? After 7 days के बाद का जो remaining strength जो है वो कौन देंगे? C2S. So C2S is responsible for strength after 7 days. Now let us see the second point.
C2S or dicalcium silicate hydrates and hardens slowly and provides much of a ultimate strength. So this point is very important. C2S जो है वो C3S के साथ compare किया तो it hydrates slower. ठीक है, इट्स हाइड्रेशन रिएक्शन जो है C2S के साथ वो रिएक्शन भी स्लो होता है, जिसकी वजह से हार्ट भी वो स्लोली हार्ट होना लगते हैं. बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है इन द एंड, जो मतलब एंड का लेटर स्ट्रेंथ, यू कैन से द लेटर स्ट्रेंथ कौन देंगे? C2S. ठीक है, like see the third point, it is responsible for the later strength of the concrete. And let us see the fourth point. It produces less heat of hydration. Now this is important point. अभी हमने पढ़ा था कि C3S जो है वो बहुत ज़्यादा heat of hydration produce करते हैं. But if you compare C2S, C2S less heat of hydration देते हैं. Okay? So if you compare these two, first difference क्या है? C3S जो है वो early strength of cement देते हैं, यानी कि शुरुआत का first 7 days strength. C2S लेटर स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि आफ्टर 7 days. ठीक है, C3S हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, whereas in C2S हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस प्रोड्यूस करते हैं. Okay, now let us move to the third compound, that is C3A, or we also call it tricalcium aluminate. Let us see what happens there. The reaction of C3A with water is very fast and may lead to an immediate stiffening of paste. ठीक है, so this part is very important now. अब जो ये चार कंपाउंड में से C3S, C2S, C3A, C4AF में से, इन चार में से सबसे जल्दी रिएक्शन पानी के साथ कौन करेंगे? C3A, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन जल्दी होने की वजह से इमीडिएट स्टिफनिंग होना लगता है, यानी कि सेट होना शुरू हो जाता है. ओके, और उस सेट होने को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश सेट. यू सी हियर, सी रीड हियर. The reaction of C3A with water is very fast and may lead to an immediate stiffening of paste, and this process is termed as flash set. यानी कि because of C3A वो बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जल्दी जल्दी सीमेंट को स्टिफ बनाते हैं. हमने पढ़ा था ना कल, सीमेंट को कड़क बनाता है, जिसकी वजह से उस हमें लगता है कि सीमेंट सेट होने लग गया है, लेकिन उसको हम बस बोलते हैं फ्लैश सेट. अब फ्लैश सेट क्या है? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. फ्लैश सेट क्या होता है? फ्लैश सेट ये होता है, फर्स्ट थिंग हमें पता है फ्लैश सेट C3A की वजह से होता है. सेकेंड थिंग, फ्लैश सेट में हमें लगता है कि सीमेंट जो है वो हार्ड हो गया है, लेकिन एक्चुअल में सीमेंट बस सेट हुआ है, यानी कि सीमेंट बस स्टिफ हुआ है, बस कड़क हुआ है. लेकिन उसमें अगर आप प्रेस करोगे या उसको हम छू के देखेंगे तो देखेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ गेन नहीं हुआ है. सो फ्लैश सेट इज लाइक अ धोखा, मतलब अपने आंख को धोखा देना जैसा है कि हमें लगा कि सीमेंट सेट हो गया, सीमेंट हार्ड हो गया, लेकिन सीमेंट हार्ड नहीं हुआ है, सीमेंट बस सेट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश सेट. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्लैश सेट 2 to 3% of gypsum is added at the time of grinding the cement clinker. Now this part is very important. आपने देखा होगा कि सीमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में जिप्सम भी हम ऐड करते हैं, और ये आपको एक अब ये गेट का क्वेश्चन भी आप कंसिडर कर सकते हो. वो पूछते हैं सीमेंट में हम जिप्सम जो है 2 to 3% क्यों डालते हैं? So you should know that we add gypsum mainly to prevent flash setting due to C3A. अभी हमने पढ़ा कि C3A की वजह से जल्दी रिएक्शन होता है और सीमेंट में फ्लैश सेट होने का चांस होता है. उस फ्लैश सेट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? 2 to 3% जिप्सम हम सीमेंट में ऐड करते हैं. ठीक है, The hydrated C3A do not contribute to any strength of the concrete. Now remember, strength जो है mainly C3S and C2S देते हैं. C3A do not contribute any strength property in cement concrete. Now let us see the fourth book compound, that is C4AF.
C4AF hydrates rapidly. It does not contribute to the strength of concrete. So similarly, like C3A, C4AFB do not contribute any strength, contribute to the strength of concrete. The hydrates of C4AF shows a comparatively higher resistance to sulfate attack than hydrates of C3A. So C4AF का C4AF mainly किस में help करते हैं? We will study that in later कि concrete या cement में sulfate attack करके भी होते हैं. So mainly sulfate attack जो है उससे resist, उसको prevent करने के लिए, sulfate attack को resist करने के लिए हम C4AF का helps in resisting sulfate attack. Now let us see this. So one more thing I want you guys to remember is एक general reaction है, ये आपके syllabus में इतना important नहीं है, लेकिन you know this is very important in terms of your BE. You have to understand that, I'll write it here, एक general concept. जब cement, this is C is cement, plus cement में जब water, cement में जब water react करते हैं, ठीक है, chemistry. When cement and water react, then उसमें दो main चीज produce होते हैं. Number one is called CSH gel. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल भी बोलते हैं. CSH जेल जो है वो फॉर्म होते हैं एंड साथ में बाई प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होते हैं. ओके, so please remember this as like a general knowledge. When cement and water reacts, then the product form is CSH gel plus calcium hydroxide. So now let us see this reaction. You don't need to remember this reaction, you just need to understand the concept. Okay, reaction of hydration. अब हमें पता है कि सीमेंट में 4 कंपाउंड है, ठीक है, C3S, C2S, C3, C4AF. अब हम हर एक का रिएक्शन देखेंगे. तो लेट अस सी, जब C3S पार्ट ऑफ सीमेंट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, तो देखो फर्स्ट का 2C3S plus 6H will give you C3S2H3, that is CSH gel plus 3CH. CH is calcium hydroxide. Now the main thing you need to notice is percentage. आप देखो जब C3S वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो CSH जेल कितना परसेंटेज दिया? 61% और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 39% दिया. ओके, so you need to understand that CSH gel is very important compound. CSH gel जो है वो ही हेल्प करते हैं अपने सीमेंट को स्ट्रक्चर देने में और प्लस स्ट्रेंथ देने में. तो CSH gel जो है जब C3S और पानी रिएक्ट किया तो 61% देते हैं. Now let us see the second one. जब C2S 2C2S plus 4H यानी कि वाटर रिएक्ट करते, ठीक है, C2S कंपाउंड ऑफ सीमेंट प्लस वाटर जब रिएक्ट किया तो CSH जेल कितना परसेंटेज दिया? देखो 82% ऑफ CSH जेल दिया and 18% of calcium hydroxide. Okay, so from these two we can make out that C2S compound gives more amount of CSH gel in compare with the C3S. Okay, and CSH gel is more important, which helps in contributing strength, whereas calcium hydroxide is just a byproduct. Okay, so from here also we can see that C2S is much more better than C3S in terms of lower heat of hydration, and also it gives more CSH gel content. I wanted to show that difference, that's why I showed you this reaction. Okay, now let us see this diagram. This is a diagram of a hardened cement. ठीक है, when cement and water reacts, then
उसके बाद जब सीमेंट हार्ड होना लगता है, सो सीमेंट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, यानी कि जब सीमेंट सेट हो गया है, ठीक है, तो उसमें कैसे दिखेंगे? कैन यू सी दिस सी एस एच जेल? These are the CSH gel. Okay, it has a needle-like structure, and then there is also CH crystal. If you see the small crystals that has been formed, जैसे crystal sugar crystal जैसा form हो रहा है ना, that is your CH crystal. and जो fibrous एकदम needle like structures जो form हुआ है वो आपका CSH gel है. So this is how a hardened cement looks like, okay, after the reaction with water. So these are the few hydration reaction. ठीक है, जब हर एक कंपाउंड, बोक कंपाउंड ऑफ सीमेंट जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, यू कैन गो थ्रू दिस फॉर योर मोर नॉलेज एंड फॉर क्लियर concept. Now this is a very important graph that you need to understand. Okay, now if you see here, okay, now if you see here, this graph shows the relation between y-axis में देखो compressive strength and in x-axis age. Okay, यानी कि days. So if you see the graph mainly for C3S, see शुरू में, now this is after cement and water has been added. Okay, cement और water add होने के बाद see शुरू में देखो C3S, the beginning 7 days में कितना स्ट्रेंथ दिया है? यू सी ऑलमोस्ट 20 to 25 के बीच में जो स्ट्रेंथ दिया है, 20 to 30 के बीच में 25. सो बिगिनिंग में आप देखेंगे तो C3S बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, शुरू के दिन में. देन आफ्टर 28 days और उसके बाद नाउ द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, इट इज स्लो. ठीक है, comparatively if we see for C2S, shuru in early days the strength is not much, ठीक है, the strength is very less, but after 7 days, after मतलब after 7 day के बाद आप देखो now the later strength बहुत ज़्यादा increase हो रहा है, यानी कि later strength. आप days भी देखो, अब आप कंपेयर करोगे तो C2S देखो 28 डेज तक उसने स्ट्रेंथ दिया, फिर 90 डेज तक थोड़ा दिया, 90 डेज के बाद बहुत कम कम देने लगा था. लेकिन अगर आप C2S कंपेयर करोगे तो यू विल सी दैट C2S बिगिनिंग में 7 डेज के पहले एक भी स्ट्रेंथ नहीं दिया, 7 डेज के बाद वो एकदम इंक्रीज होते जा रहा है. 90 डेज में देखो कितना स्ट्रेंथ दिया, 30 to 40 के बीच में दिया. उसके बाद देखो 180 डेज तक वो इंक्रीज होते गए, ऑलमोस्ट 50 और 360 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल तक वो उसका स्ट्रेंथ जो है एकदम स्लोली ग्रेजुअली लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे. तो हम देख सकते हैं कि C2S जो है लेटर स्ट्रेंथ बहुत कंट्रीब्यूट किया है और C3S अर्ली स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट किया है. Whereas C3A and C4A you can see it contributes very less strength in concrete. Okay, so this is the relation of Bock's compound with compressive strength. Now let us see the physical and chemical properties of OPC. Okay, so the first property is fineness of cement. What is fineness of cement? It is a measure of size of particles of cement. यानी कि हर एक particles जो होता है, ठीक है, सीमेंट में अलग, it's very small, but if you measure it, there are different sizes of particles available in cement. So that measure of size of particle की उसमें छोटे छोटे बहुत fine particles है या थोड़ा coarse particle यानी कि थोड़ा बड़े particles है, कैसा type of particles present है उसकी measure को हम बोलते हैं fineness. It is expressed as percentage retained on 90 micron sieve. अगर हम उसको डिफाइन भी करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, जितना अगर हमने सीमेंट को
90 micron sieve. Okay, sieve you must have studied in soil mechanics, right? If you haven't, okay, sieve, what sieve क्या होता है? It is like a छानने, जैसे आपकी जो मैदा मैदा आटा वगैरह को छानते हैं ना, है कि नहीं? ऐसे सिमिलरली आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि आईएस सीव्स होते हैं इवन एग्रीगेट्स या सॉइल या कंक्रीट में भी, सीमेंट को भी छानने के लिए। तो 90 माइक्रोन साइज सीव से जितना भी रिटेन हुआ, ठीक है, मानो आपने 100 ग्राम सीमेंट लिया और उसको 90 माइक्रोन सीव से पास किया, तो मतलब मानो कि 15 ग्राम जो है वो रिटेन हो गया और रिमेनिंग 85 ग्राम जो है वो पास हो गया। तो उसका फाइनेस कितना होगा? 15 ग्राम रिटेन हो गया, तो 15 अपॉन टोटल वेट कितना था? 100। सो 15 अपॉन 100 इंटू 100% कितना आएगा? 15%। सो वी कैन से कि उसका फाइननेस 15% है। तो सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ how much percentage by weight of particles gets retained on 90 micron sieve. Okay? With the increase of fineness, the rate of reaction increases. So जैसे fineness increase होगा तो obviously उसको surface area भी increase होगा, क्योंकि fineness increase होगा मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे, जितना छोटा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, जितना छोटा साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो अगर ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से अगर फाइननेस इंक्रीज हुआ तो हाइड्रेशन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगा। High rate of reaction might cause early setting and greater heat causing cracks. Now this is important. अभी हमने पढ़ा था कि hydration reaction अगर बहुत जल्दी हुआ, okay, if the reaction hydration reaction is very rapid, then obviously the strength gain will also be uh, very rapid, मतलब strength gain will also be very rapid। तो रिएक्शन जल्दी होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोड्यूस होगा, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से उसमें क्रैक्स वगैरह आने का चांस भी होता है। सो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सीमेंट फाइन होनी चाहिए, लेकिन इतना भी फाइन, इतना भी स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन रिएक्शन हो और क्रैक्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो fineness is measured by two methods. Number one, IS sieve method, and second one is air permeability method. So these are the two methods to measure fineness of cement. Now let us see the second property, that is setting time. अब setting time क्या है? It is the phenomenon by which the green cement changes into hard mass. ठीक है, तो setting time exactly क्या है? अब मानो अभी आपके पास सूखा सीमेंट है, उसका कलर क्या होता है? थोड़ा ग्रीनिश ग्रे होता है। अब अभी आप वो 0 सेकेंड है, ठीक है, टाइम 0 सेकेंड में। अब आपने उसमें पानी डाला, ठीक है, उस सीमेंट में पानी डाला, तो क्या होगा? वो सीमेंट जो है थोड़ा सा हार्ड होना शुरू होगा, यानी कि सेट होना शुरू होगा। तो शुरू से यानी कि जब से, यानी कि मानो 0 सेकेंड से अभी कितना टाइम तक वो सीमेंट फुल्ली सेट होने में लगा। अभी मैं हार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली द टाइम टेकन फॉर द सीमेंट टू सेट, ठीक है, फ्रॉम ग्रीन, इट्स ग्रीन कलर टू ऑलमोस्ट हार्ड मास, वो एकदम हार्ड बन जाती, तो वो टाइम कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं सेटिंग टाइम, ठीक है। नंबर 3 इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम वो भी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। Number 4 is soundness. So what is soundness? The increase in volume of cement after setting makes the cement unsound. So sometimes what happens is when you add when you add water to the cement and when hydration reaction takes place, sometimes there is an increase in the volume of cement, okay, uneven increase in volume of cement. So this increase in the cement, in the volume of the cement makes your cement unsound, ठीक है, वो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। तो अनसाउंड क्या है? जब सीमेंट में जब सीमेंट
में जब पानी के साथ रिएक्ट होते हैं और जब उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस सीमेंट को एक्सपैंड कराते हैं, तो उस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं अनसाउंडनेस। ठीक है, तो हमें चेक करनी चाहिए कि हमारा सीमेंट साउंड है या अनसाउंड है। ठीक है, साउंड है तो ठीक है, यानी कि उसमें वॉल्यूम चेंज ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हुआ तो हम उसको बोलते हैं अनसाउंडनेस। It is mainly caused by free lime and magnesia present in cement. So unsoundness किसके वजह से होता है? Free lime and magnesia. Okay? अगर वो सीमेंट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसका लाइम और मैग्नीशिया, तो उसकी वजह से उसमें साउंडनेस आने का चांस होता है। Now the fifth property is heat of hydration. You already know, ठीक है? Heat of hydration is the heat produced during the hydration reaction. अगर बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से भी सीमेंट में एक्सपैंड हो सकता है और क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकता है। नंबर 6 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट. We use specific gravity of cement also mainly during the calculation of mix design. Now let us see the different grades of ordinary Portland cement, यानी कि OPC. So basically this is like the main three grades of OPC, and they are 33 grade cement, 43 grade cement and 53 grade cement. So what is 33 grade cement? वो क्या है? If the 28 days strength is not less than 33 Newton per millimeter square, it is called 33 grade cement. So अगर हमें पता है कि जो सीमेंट जो है ओके, एक बार हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया तो 28 डेज के बाद अगर उसका स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं है, उससे ज़्यादा है, 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं 33 ग्रेड सीमेंट. ठीक है, यानी कि कम नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली 43 ग्रेड सीमेंट क्या है? If the 28 days strength is not less than 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो अगर 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ सीमेंट का 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं है तो उसको 43 ग्रेड सीमेंट बोलते हैं. सिमिलरली 53 ग्रेड सीमेंट इज उसकी 28 डेज स्ट्रेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. Now if you see the physical characteristics of different types of OPC cement in table, let us see 33 grade cement first. ठीक है, उसका फाइननेस कितना होनी चाहिए? यूजुअली फाइननेस 225 मीटर स्क्वायर पर kg मिनिमम. ओके, एंड साउंडनेस जो है we will study about that. Okay, leave this one now. Let us move to the last table, compressive strength. Okay, compressive strength, can you see? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 33 ग्रेड सीमेंट का, लेट अस सी. वन डे फर्स्ट डे में तो देयर इज नथिंग. ओके, आफ्टर 3 डेज 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इतना गेन होनी चाहिए. आफ्टर 7 डेज 22 गेन होनी चाहिए, और आफ्टर 28 डेज एटलीस्ट 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर गेन होनी चाहिए. ठीक है, सिमिलरली फॉर 43 ग्रेड देखो, फर्स्ट 3 डेज में 23 होनी चाहिए, फिर आफ्टर 7 डेज 33 और आफ्टर 28 डेज 43. 53 ग्रेड का देखो, फर्स्ट 3 दिन में 27 मिनिमम होनी चाहिए, 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. आफ्टर 7 डेज 37 और आफ्टर 28 डेज नॉट लेस देन 53 होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस शोज कि हर एक ग्रेड सीमेंट जो होता है ओपीसी का, उसका स्ट्रेंथ गेन जो है 3 दिन में कितना होनी चाहिए, 7 दिन में कितना होनी चाहिए, और बाय 28 दिन कितना होनी चाहिए, दैट शोज हियर. Okay, so we will keep our second lecture till now, till here. From next lecture we will start with field testing of cement. Okay, I hope you don't have any, I hope I made your concept clear, and
If you have any problem or anything, please drop me a mail. All right, I will be there to clear your doubt, or you can message me on my number, or you can call me for any doubt. Thank you.